Hello everyone, very good evening. I hope you all are doing great. So today in the class we are going to we are going to continue with the magnetism thing. But in today's class really we are going to do a lot. So I require everybody's attention. We will be doing things, so many things. ठीक है. कल के क्लास में we ended with Biot-Savart law. कल के क्लास में we couldn't do much because we did some good number of questions. ठीक है. So what was the Biot-Savart law? Just like we have Coulomb's law in electrostatics, in magnetism we have with us Biot-Savart law, which tells that if there is current flowing in a wire, then magnetic field because of current element, that is your ideal. ठीक है. And current this current element, because of this current element, magnetic field at any point P, which is at a position vector r from here, ठीक है, magnetic field value will be equal to how much? It will be equal to mu naught by 4 pi I dl cross r divided by r cube. ठीक है. When you will solve it, what you are going to get? You are going to get mu naught by 4 pi r square. ठीक है. या फिर इसको ऐसे क्लब करके लिखते हैं so that we can do the good comparison between Coulomb's and Biot-Savart law. And this is equal to how much? I dl sin theta divided by r ka square, right? And in Coulomb's law we have what? We have expression of electric field, and that is equal to how much? If there is a charge q and a distance r, if you have to calculate electric field, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q divided by r ka square. So now let's talk about first what is the source of magnetic field in Biot-Savart law and what is the source of electric field in Coulomb's law. So just let's take the two columns. In this column, we will be talking about Biot-Savart law, and in this column, we are going to talk about Coulomb's law. Okay. So let's talk about the source first. What is the source here in Biot-Savart law? That is current element, ideal. Okay. And here source of electric field is what? Point charge, that is Q. ठीक है. अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे सोर्स क्या है? आइडियल, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? डीएल हियर इज अ वेक्टर in the direction of current. So basically in Biot-Savart law, magnetic field source is a vector, and in case of Coulomb's law, electric field source is a charge which is scalar. So यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा vector. So it here the source is a vector source and here the source is a scalar source. ठीक है. Now what is this is the difference you can see. At the same time, if you talk about how magnetic field depend on the position vector, so it is inversely proportional, and here also it is inversely proportional to distance ka square. This is similarity. Now what is one more difference? I would say difference is that here magnetic field depends on angle. It is depending on angle. Here it is not dependent on angle, you know, because in the Biot-Savart law we are getting term sine theta. We are getting term sine theta right here. So it is depending on theta. Theta is what? Angle between current element and position vector. So it is this angle here, right? And in Coulomb's law, there is no such angle term. So again, they are not dependent on angle. And these are the ways you can compare things. अगर आप देखो यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंडेंस सेम है, करंट यहाँ पे वेक्टर सोर्स है and here the source is a scalar source. Again here if you see, then in cases mu naught by 4 pi is getting replaced here by 1 upon 4 pi epsilon naught. So these are the comparisons you can do, nothing much. So this was your Biot-Savart law. Done it? Now this is magnetic field. Magnetic field का unit क्या होता है? Let's talk about the unit of magnetic field. So magnitude we have written in terms of according to Biot, and that is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta divided by r का square. This is the expression we got, right? अगर इसको without break किए आप लिखते हो तब हम कैसे लिखेंगे? mu naught by 4 pi I dl cross r by r cube. ठीक है? This is this. Now what is the unit of magnetic field? इसका unit होगा टेस्ला. ठीक है? This is the unit.
In this unit, we will be seeing magnetic field is written. Then, so this is the unit. Remember it. Now let's start calculating magnetic field because of circular current loops and because of a straight current loops. ठीक है? We already know how to find out the direction. Direction आप सभी जानते हो कि if current is flowing in a straight wire, then uh, if there is current flowing in a circular loop, how you can calculate or how you can find out the direction of magnetic field, and in case of a straight wire also, how you can find out the direction of magnetic field. In this section, we are going to calculate the value of magnetic field by using Biot-Savart law. जिस तरह से हमने एक चार्ज्ड रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था at any distance x by using Coulomb's law. Similarly, we are going to do the calculation for current carrying loop. So here is a loop. Here is the loop. ठीक है? And because of this loop, we have to calculate electric field at point P, sorry, magnetic field, which is at a distance x from the center of the loop. How we are going to do this? So the same way as you dealt with electric field calculation because of charge on the ring, do the same thing. ठीक है? So take the element. You already know such elements. ठीक है? अब मुझे ज्यादा explain करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि you already, we have already discussed such sort of structures, how to take elements, how to calculate a small value first. So I will take element here. Okay, I won't be explaining much because in electrostat we have done it already. Similar thing we have to done here. So let's take the element here. This element is of length dl. ठीक है? Now in this element, अगर इस element को मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये element कुछ straight ऐसा दिख रहा है. ठीक है? This is a very small element. So very small element at the top will look like a straight line. यहाँ पे मैंने बड़ा बनाया है just to show you. And in this element, current is flowing in this sense क्योंकि ये current ऐसे जाएगा. ठीक है? So current is flowing in this sense, and because of this element, we are calculating magnetic field at point P. So यहाँ से सबसे पहले position vector बना लो. What is the position vector? Let's say this is R. Done है. इसको आप क्या बुला लो? R बुला लो. Yes, Kiran. That is there. So R बुला लो आप. Position vector. Now if you go on to write the magnetic field, first let's write the magnitude. So magnitude क्या लिखोगे? Mu naught by 4 pi I dl cross r divided by r cube. अब मुझे ये बताओ dl और r के बीच का एंगल क्या है? Look at it carefully and tell me what is the angle between dl and r here. तुम लोग अगर ज्योमेट्री देख पा रहे हो then let me know. What is the angle between dl and r? Yes, 180 नहीं, 180 कैसे दिख रहा है? ध्यान से देखो. ये लुक कैसा है? सर्कल है, एंड आई एम नॉट वेयरिंग बैंगल्स, अदरवाइज जस्ट गिव मी सम टाइम. ओके, सो यहाँ पे देखो सिस्टम कैसा है.
तब शायद तुम लोग पहचान पाओगे। सो सिस्टम लुक्स लाइक, यू कैन सी दिस बैंगल, राइट? ये ना ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये सर्कल ऐसे नहीं रखा हुआ, इट इज इन दिस प्लेन, वर्टिकल प्लेन में है, ठीक है? ऐसे है, एंड करंट इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है? करंट इज गोइंग लाइक दिस, एंड देन आर वेक्टर इज लाइक दिस। आर वेक्टर कुछ ऐसा है। अब मुझे ये बताओ कि डीएल और आर के बीच में एंगल क्या होगा? डीएल इज दिस, आर इज दिस, क्या होगा बताओ? कैन एनीबडी सी? 90? यस, एग्जैक्टली इट विल बी 90। एग्जैक्टली 90 दिखेगा, अगर तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो इट विल बी एग्जैक्टली 90 परपेंडिकुलर, यस। क्योंकि देखो, डीएल इज दिस, डीएल इज दिस अलोंग दिस, आर इज दिस, तो टेंजेंशियल सॉर्ट ऑफ थिंग इज हैपनिंग, राइट? सो डीएल और आर के बीच में एंगल क्या है? यहाँ पे ऐसे आप मार्क कर दो, लेट्स से दिस इज डीएल and let's say this is dr, then angle between dl and dr is 90 degree. So magnitude आप क्या लिखने वाले हो? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl cross r, dl r sin 90, so basically dl into r divided by r cube. So this is basically mu naught I by 4 pi dl by r का square. This is a small value of magnetic field. Now if you go on to calculate the direction of magnetic field, direction magnetic field का किधर होगा? P point पे, because of this small length dl, किधर होगा बताओ? अब आप सोचो कि जैसे मैंने बोला ना, दिस इज डीएल, दिस इज डीएल, राइट? एंड दिस इज आर, डन है? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? क्या दिख रहा है यहाँ पे? डायरेक्शन किधर होगा? डेफिनेटली डीएल और आर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हो, दिस इज डीएल क्रॉस आर। इफ यू डू डीएल क्रॉस आर, लेट्स से, देखो डीएल और आर ऑलरेडी क्या है? दिस इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर। लेट्स से इससे एक और परपेंडिकुलर लाइन बना लो ऐसा, एंड लेट्स से डीआर को मैं एक्स एक्सिस मान लेती हूँ, डीएल को मैं वाई एक्सिस मान लेती हूँ, तो दिस अनदर वन विल बिकम जेड एक्सिस, ठीक है? यू हैव टू डू वाई क्रॉस एक्स, राइट? सो इफ यू डू दिस, क्या होगा बताओ? किधर जाएगा? एनीबडी? नहीं, मैंने क्या लिया? मैंने लिया, अच्छा, ठीक है, यू आर करेक्ट टू से दैट। एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो लिया है ना डीएल को, देखो, लेट मी शो यू वन थिंग, कि जो जो हम लोग कन्वेंशनल लेते हैं ना, ये लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। सो कन्वेंशनली जो एक्स वाई एक्सिस होता है और एक्स वाई प्लेन जो बन रहा है वो सेम प्लेन में होता है, वाई और एक्स एक्सिस सेम प्लेन में होता है, एंड जेड परपेंडिकुलर प्लेन होता है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो डीएल इज दिस, ठीक है? एंड आर इज दिस। सो आर जिस प्लेन में है ना, उसी प्लेन में तुम्हारा पॉइंट पी है। ध्यान से देखो, पॉइंट पी उसी प्लेन में है। सो डीएल वेक्टर इज बेसिकली, यू कैन से, डीएल वेक्टर जो तुम्हारा है, दैट इज जेड एक्सिस वाला थिंग। सो इसको आप जेड एक्सिस मानोगे, इसको वाई मान लो। मैंने क्यों बोला, समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग मी? देखो, ये जो लुक है, इट इज इन दिस प्लेन, ठीक है? ये इस प्लेन में है। इस प्लेन को आप क्या मान रहे हो? इस एक्सिस को, लेट्स से, कैसे बताऊं तुम लोगों को? लेट मी शो यू वन मोर डायग्राम। यहाँ पे ध्यान से देखो, दिख रहा है तुम्हें डीएल वेक्टर कुछ ऐसा दिख रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना? यहाँ पे मैंने करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट ले लिया एक्चुअली, इसलिए करंट बाहर की तरफ आ रहा है। सो ये डायग्राम में ऐसा है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है? ऐसे, तो टॉप पॉइंट पे करंट है टुवर्ड्स मी, ठीक है? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज आर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी व्हाट? इट विल बी डीएल क्रॉस आर, एंड डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। डीएल क्रॉस आर क्या होगा? डीबी क्या होगा? डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू डीएल, डीबी विल बी परपेंडिकुलर टू आर। सो डीबी को आर से तो परपेंडिकुलर होना है, लेकिन देखो, आर से परपेंडिकुलर हम दो डायरेक्शन बना सकते हैं, प्रीवियस केस में जाओ, ये है आर, इससे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकता है, एक इधर दूसरा इधर। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन सा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा इस केस में? यहाँ पे अगर करंट ऐसे जा रहा है तो बताओ।
ऐसे भी तुम लोग ध्यान से देखो, अगर तुम फिंगर को क्रॉस करोगे ना, राइट हैंड से भी निकाल सकते हो। डीएल किधर है? अंदर है। आर किधर है? इधर है ना? डीएल क्रॉस आर, क्रॉस हम कैसे करते हैं? जैसे एक चीज ध्यान से देखो, आई क्रॉस जे करते हैं, ये है आई, ये है जे। तो आई इधर है और किसकी तरफ क्रॉस करना है? जे की तरफ। सो आई इधर है और जे इधर है, क्रॉस किया तो थंब किधर जा रहा है? परपेंडिकुलर, यानी कि के कैप। आई क्रॉस जे इसलिए क्या लिखते हैं? के कैप लिखते हैं। अब तुम डीएल वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इधर। और क्रॉस किधर करना है? आर की तरफ, तो क्रॉस कर दो इधर। आर, डीएल क्रॉस आर किधर जा रहा है? इधर। कहने का मतलब ये डाउन वाला लाइन होगा, ठीक है। अगर मैं एक्सिस से समझाने जाऊं तो कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए राइट हैंड से ले सकते हैं। संजना अप नहीं होगा यहाँ पे डाउन जाएगा। ध्यान से देखो, दिस विल बी डाउन हियर, क्योंकि डीएल इज इनसाइड, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। आर इधर है, सो डीएल से आर की तरफ जा रहे हो, थंब इज पॉइंटिंग समवेयर हियर, ठीक है। सो दैट इज योर इन दिस सेंस, राइट। अगर तुम नेक्स्ट डायग्राम की बात करो तो नेक्स्ट डायग्राम में तुम्हारा करंट क्या है? आउटवर्ड है। करंट है आउटवर्ड, दिख रहा है ना? करंट इधर की तरफ है और आर इधर है। सो तुम क्या करोगे? डीएल से आर की तरफ जाओगे। सो डीएल की तरफ पहले इसको रखो, डीएल क्रॉस आर, सो थंब कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है ना? सो इस केस में तुम्हारा डीबी ऊपर की तरफ होगा। दोनों ही केस में देख लो, डायग्राम इसलिए मैंने दो दो तरह का लिया है, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू। अगर करंट ऐसा है तो डीबी का डायरेक्शन ऐसा होगा, अगर तुम्हारा करंट ऐसा है तो डीबी का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। सो डायरेक्शन से हमने डील कर लिया। अगर तुम इस डीबी को देखो, सपोज कर लो, सबको डायरेक्शन समझ में आया? एवरीबॉडी यस और नो, लेट मी नो, आफ्टर दैट ओनली आई विल मूव अहेड। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो मुझे बता सकता है, एनीबॉडी। कंफ्यूज नहीं हो? चलो ठीक है। सो बेसिकली डीएल क्रॉस आर कर दो, डन है। अब आप देखो, इस कंपोनेंट की वजह से हमने निकाला स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, उसका वैल्यू ये है और उसका डायरेक्शन ऐसा आया। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं ना, बॉटम में एलिमेंट लेते हैं, तो करंट कुछ ऐसे है, इधर की तरफ आ रहा है ना? और इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पे, जो कि सिमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है, दिस डीएल इज ए सिमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या जाएगा? ओके किरण, यू कुडंट अंडरस्टैंड। अच्छा यार, डीएल क्रॉस आर करना है। देखो कैसे समझाऊं तुम लोगों को, दिस इज इमेजिनेशन थिंग, सो यू शुड बी इमेजिनिंग मोर। डीबी क्या है तुम्हारा? डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होगा। डीबी वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल यूनिट वेक्टर क्रॉस डी आर यूनिट वेक्टर, राइट। सो डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में जाना है। अब तुम चुपचाप देखो, आर डीएल किधर है? डीएल है इधर। टॉप पे करंट किधर जा रहा है? करंट ऐसे जा रहा है ना, ये है लूप। यहाँ पे करंट, टॉप पे करंट इधर है। सो ये है तुम्हारा इधर की तरफ। आर किधर है? लेट मी टेक अनदर पेन इफ देर इज। ओके, देर इज नो पेन हियर। गिव मी वन मोर टाइम सेकेंड, ठीक है, देन आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। यस। सो तुम्हारा डीएल इधर है ना, डीएल इधर समझ रहे हो? करंट ऐसे जा रहा है, डीएल इधर है। आर किधर है? आर इज लाइक दिस, आर इज लाइक दिस। यहाँ पे है पॉइंट पी, ठीक है। डीएल क्रॉस आर, यहाँ डीएल की तरफ अपने इस फिंगर को रखो, क्रॉस करो। क्रॉस हम कैसे करते हैं? अगर तुम्हें वेक्टर याद है तो क्रॉस करने के लिए फिंगर को यूज करते हैं। सिमिलरली जिधर से जिधर जाना है, जैसे तुम कर रहे हो डीएल क्रॉस आर, तो डीएल से आर की तरफ फिंगर को मूव करोगे। जैसे आई क्रॉस जे कर रहे हो, तो आई से जे की तरफ फिंगर को मूव करना है। आई इधर होता है, जे इधर होता है। सो आई से जे की तरफ कर रही हूँ, थंब जिधर जाएगा दैट विल बी आई क्रॉस जे का डायरेक्शन। यहाँ पे डीएल इधर है, डीएल से आर की तरफ आप मूव करो, तुम्हारा थंब किधर जा रहा है? ध्यान से देखना, दिस इज डीएल एंड दिस इज आर, थंब किधर जा रहा है? कहीं इधर जा रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, इधर, समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन डीबी हियर, ठीक है। सिमिलरली फॉर दिस डीएल एलिमेंट यू कैन डू, डीबी तुम्हारा सेकेंड एलिमेंट के लिए इधर जाएगा, ऑपोजिट चला जाएगा, ठीक है। नो नॉट दिस वे, ये परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है आर पे, सॉरी।
आर पे परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, बाय वेक्टर रूल। ओके किरण, ठीक है। तो यहां से आप देखो, इस डीबी को निकालो, सेकेंड डीबी को। सेकेंड डीबी का डायरेक्शन किधर जाएगा? इट विल बी इन दिस सेंस। सो दिस इज क्लियर, राइट? दो एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इज क्लियर, राइट? डन है। सो दिस इज द डायरेक्शन आई हैव टेकन। अब लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी क्या होने वाला है? थीटा। ठीक है। फॉर द ऑपोजिट डायरेक्शन, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो फॉर दिस एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इज दिस वे। अब देखो, इस डीबी का दो कंपोनेंट दिख रहा है हमें। इस डीबी का कितने कंपोनेंट है? दो। एक है तुम्हारा डीबी कॉस थीटा, और दूसरा तुम्हारा क्या है? डीबी साइन थीटा। ठीक है। सो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट किधर जाएगा? इन दिस डायरेक्शन। साइन थीटा कंपोनेंट इज इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली ऑपोजिट एलिमेंट के लिए अगर आप लोगे यहाँ पे, तो डीबी किधर जाने वाला है? डीबी विल गो लाइक दिस। Here dB component, one along the x axis, another along y axis. तो कंपोनेंट का वैल्यू भी सेम होगा क्योंकि डीबी दोनों साइड सेम है। ठीक है। सो ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, जस्ट लाइक वी डिड इन द चार्ज ऑन रिंग। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि इफ करंट इज फ्लोइंग इन अ लूप, then magnetic field at any point P, because of current flowing in the loop, will be what? It will be because of all current elements. Two elements we have picked up so far, this element and this element. When we are looking at these two elements, then we can say that by looking at the diagram, because of these two elements, net magnetic field at point P is in this direction. ठीक है। So dbx is getting added, basically dby is getting cancelled out. Similarly, we can take element here, 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 and in all cases, these opposite cases, what will happen? Magnetic field at point P will get added in the axial direction, towards conventional x-axis direction, right? So basically, when you are calculating magnetic field at the point P, you have to add dbx because of all elements. Okay? The way we did in electrostat. So let's add it now. So dbx को add करना है। ठीक है। add मतलब integration. db का वैल्यू क्या लिखोगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl into r. Sine theta, you already know that is 90. So sine 91 divided by r cube. This was this. And this will be equal to how much? Mu naught by 4 pi I. Constant को बाहर ले लो. And this is dl by r का square. ठीक है. Now let's talk about r का square. Is it a constant or variable? So this is capital R. This is x. R का square will be r square plus x square. So basically, this is also a constant. ये constant होगा to the point, to the long, this point P is fixed. So at point P we are calculating, right? So x is fixed, r is fixed. R square plus x square is fixed. So r, this small r का square is also fixed. तो इसको भी आप बाहर निकाल लो rather than writing it here. ये भी एक constant है. So take it outside the integration sign. It is this. dl को integrate कर लो. ठीक है। तो dl का इंटीग्रेशन क्या होगा? dl का मतलब क्या हुआ? dl का मतलब हो गया sum of all the small lengths. So sum of all small length will be equal to how much? 2 pi r. Length of this is how much? Total length 2 pi r. So here it will be 2 pi r. So answer of magnetic field you are going to get mu naught I by 4 pi into 2 pi into r. r का स्क्वायर को ब्रेक कर दो, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट एंड। ओके, कॉस थीटा वाले एलिमेंट को हम ऐड कर रहे थे ना, आई डेंट राइट कॉस थीटा, सॉरी। तुम लोग भी चुपचाप सुनते जाते हो। कॉस थीटा मैंने लिखा कहाँ? लिखना था। dbx ऐड कर रहे हैं ना, कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं। सो राइट हियर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई आर स्क्वायर, दिस इज db। x क्या हो जाएगा? dbx, दिस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो, ये कॉस थीटा का वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट टर्म्स को आप बाहर ले लो। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर कॉस थीटा, दिस आर कॉन्स्टेंट्स, राइट? dl, डीएल का इंटीग्रेशन अभी अभी हमने देखा, 4 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। डीएल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। नाउ वैल्यूज को पुट कर दो आप अब।
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक्स बाई स्मॉल आर, सो दिस इज एक्स बाई स्मॉल आर इंटू ऑलरेडी 1/r² था इंटू 2 पाई आर। सो 4 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा बाई 2 टाइम्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, म्यू नॉट आई एक्स बाई आर क्यूब। आर का वैल्यू पुट कर दो, r² प्लस एक्स स्क्वायर, सो यू विल गेट म्यू नॉट आई एक्स बाई r² प्लस x² 3/2। अगर तुम लोग इंटीग्रेशन सही से जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैट क्लास को सही से फॉलो किए हो, देन ये तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। लेट मी नो नाउ। इसलिए मैं टाइम एंड अगेन कहती हूँ कि होमवर्क करना बहुत जरूरी है। वट एवर आई एम टीचिंग यू, यू नीड टू गो थ्रू दैट, अदरवाइज हर क्लास बर्डन लगेगा। एनीबडी, you all understood what you are getting? Magnetic field value at point P because of current flowing in the wire will be mu naught Ix by r² plus x² 3/2. ठीक है? So if you are given there is a coil through which current is flowing on the axis at any point P, you have to calculate magnetic field. Value will be mu naught Ix by r² plus x² का power 3/2. This is going to be the case. ठीक है? I hope you all have understood it. चलो ठीक है. So we have calculated magnetic field at an axial point. What will be the magnetic field at the center of coil? So just now we calculated magnetic field at a distance x. और यहाँ पे magnetic field कितना आया, म्यू नॉट आई एक्स बाई r² प्लस x² का पावर 3/2. एक सेकेंड, लेट मी चेक. कॉस थीटा का वैल्यू मैंने लिखा, मैंने कुछ गलत किया यहाँ पे. कॉस, दिस वाज थीटा राइट, so if this was the magnetic field, कुछ एंगल लेने में मिस्टेक हुआ है. लेट मी चेक. सॉरी सॉरी, एक्चुअली जो dv cos थीटा हमने लिया था, दिस एंगल वाज थीटा राइट. ओके, so dv, this angle is going to be, let me check, hold on. Okay, if this angle is theta, this angle won't be theta. यहाँ पे ज्योमेट्री में मिस्टेक है, तुम लोग ध्यान से देखो. This won't be theta, right? If this is theta, it means which angle should be theta? This is angle between horizontal and this line. इस लाइन पे परपेंडिकुलर ये है, हॉरिजेंटल पे परपेंडिकुलर ये है. दिस एंगल शुड बी थीटा. ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था. ये चीजें डन है. यू शुड हैव सीन द ज्योमेट्री. ध्यान से देखो. इफ दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल विल बी थीटा, नॉट दिस एंगल. ये एंगल तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा. ठीक है, सो देयर वाज अ मिस्टेक. यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, सो आई जस्ट टुक इट, आई डिडंट लुक एट द डायग्राम. इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, एंड इफ दिस इज थीटा, देन डीबी वाई का कंपोनेंट होगा डीबी कॉस थीटा, एंड डीबी एक्स विल बी डीबी साइन थीटा. समझ रहे हो? एंड सो इफ दिस इज दिस, देन वी नीड टू ऐड dbx, वो तो हमें ऐड करना है, देर इज नो मिस्टेक इन दैट. बट यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि जिसको हमने थीटा माना है ना, दैट इज योर 90 माइनस थीटा बेसिकली. सो यहाँ पे साइन थीटा होगा. एंड इफ दिस इज साइन थीटा, मैं यहाँ पे बस करेक्ट कर देती हूँ, इसको आप साइन थीटा लिख डालो. कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को बस वैल्यूज डिफरेंट पुट करने थे. साइन थीटा, एंड साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, देखो, अगर साइन थीटा निकालो तो आर बाई स्मॉल आर होगा. सो यहाँ पे आर का टर्म आएगा रादर देन स्मॉल एक्स. सो यहाँ पे ये आर होगा, सॉरी, यहाँ पे भी ये आर होगा. ठीक है, दिस वॉज द मिस्टेक. दिस एंगल इज थीटा इटसेल्फ, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस. इस डायग्राम में प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ पे मैंने थीटा लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था. सो बेसिकली दैट वाज नॉट ट्रू. ये वाला एंगल थीटा होगा. एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, देन dv cos theta is getting cancelled, dv sin theta is getting added, and so I added here now dv sin theta. This is the answer. ठीक है, तो बेसिकली
जब मैं यहाँ पे फाइनल आंसर लिख रही थी, देन आई गॉट रिमाइंडेड ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि रॉन्ग आ रहा था। म्यू नॉट आई आर divided by r square plus x square 3 by 2. You should not get confused. Whatever I have explained is correct. Only the thing was कि एंगल में प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, जिसको मैंने थीटा लिखा था यहाँ पे, थीटा वो बेसिकली 90 माइनस थीटा था। इसीलिए जहाँ पे साइन थीटा, जहाँ पे कॉस थीटा है वहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। So no other mistake. So magnetic field का value is this. So at a point x, at a distance x from the center, magnetic field is how much? This much. What will be magnetic field at the center? So for center, if you have to calculate magnetic field here at point C, then x will become what? 0. So magnetic field at center of a coil, if you are calculating, then B का value क्या होगा? B होगा म्यू नॉट आई आर, x का वैल्यू आप 0 कर दो, आर स्क्वेयर का पावर 3/2, एंड 2 कैंसिल होगा। ठीक है, मैंने एक चीज और यहाँ पे लीव किया ना, 2 होगा ना यहाँ पे एक्चुअली। ओके, 2 को छोड़ दिया शायद मैंने, 2 को लीव किया फिर से। एनीवे यहाँ पे आप लिखो म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2, this is r square, so this will become, I mean r cube, right? अगेन यार कुछ तो गड़बड़ आ रही है। लक्ष्मी, हाउ डिड आई टेक थीटा? ओके, क्या बोलूं मैं, सारा ही चीज अजीब सा हो गया। आई मीन ठीक है, एक काम करते हैं, फिर से करते हैं, डोंट वरी। सो लेट्स डू अगेन। सारी चीजें मिस्टेक में ही जा रही है, सो एक काम करते हैं, फिर से करते हैं, गिव मी सम टाइम। ठीक है, लेट मी डिलीट एवरीथिंग, डोंट वरी। देखो एक सिंपल मिस्टेक से चीजें कितनी ज्यादा गलत हो जाती है। सो टाइम गॉट किल्ड बेसिकली, गिव मी सम मोर। Actually, there was no current. That is why I had to shift my position. That is why it took this much time. Anyway, चलो स्टार्ट करते हैं। सो मैंने ये बताया, हमने एलिमेंट लिया, ठीक है। और जब हमने एलिमेंट लिया, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस डायग्राम, लेट्स टॉक अबाउट दिस डायग्राम। सो वी टुक एलिमेंट हियर, and because of this element, magnetic field at point P is dB in this direction. We have discussed all these things. Let's say if this angle, let's say this angle is theta. So if this angle is theta, then angle between these two line will be theta. क्योंकि देखो बेसिक तुम लोगों को यार पता होना चाहिए, मैं हर हर दिन एक ही चीज रिपीट करती हूँ। अगर तुम्हारा दो लाइन के बीच का एंगल थीटा होता है, ठीक है, देन एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स विल आल्सो बी थीटा। सो यहाँ पे अगर ये आर है, इस आर पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, डीबी वाला, और दिस इज वर्टिकल लाइन ऑन दिस हॉरिजेंटल इज परपेंडिकुलर।
So if angle between these two is theta, this is also theta. Let's talk like this. So this is theta. अब देखो यहाँ से db को ब्रेक किया हमने dby और dbx में. सिमिलरली ऑपोजिट एलिमेंट हमने लिया था. यहाँ से इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इधर जाएगा. अगेन यहाँ भी ये वाला एंगल क्या होने वाला है? थीटा. Since this angle will be theta again. So if you calculate here, I mean इस dB का component अगर देखोगे, then it will have component dBx and it will have component dBy. dBy is going to get cancelled, and because of these two elements at point P, we will get magnetic field in this direction, and because of these two elements, magnetic field value will be dBx plus dBx. And similarly, if we take more number of elements, because of all those elements, similarly, only x component will get added. So if you have to calculate net magnetic field, then you are going to add what? You are going to add dBx. That is what we did. So dB का वैल्यू हमने क्या लिखा था? dB का वैल्यू क्या होगा? अगर एक एलिमेंट के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड लिखते हो, तो फॉर सिंगल एलिमेंट, let's say for this element we are going to write, so dB value for this single element will be mu naught by 4 pi I dl by r का square. This is what we got, right? So this is the magnetic field because of this small element, and we have to add dBx in order to get the total magnetic field, right? So total magnetic field निकालने के लिए आप क्या करोगे? Total magnetic field because of the loop, dBx को add करोगे. So what will be the value of dBx here? What you're saying? Not sine. Let's talk about dBx का मतलब sin थीटा कैसे बोल रहे हो? यार एंगल ध्यान से देखो अब तुम लोग. मैंने सेम वे में करेक्ट कर दिया है. नाउ आई एम कॉलिंग दिस एज अ थीटा, देन दिस विल बी थीटा. ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा. सो लेट्स टॉक जस्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द डायग्राम. फॉर्मूला ऑफ डीबी आई डीएल साइन 90 ना. साइन 90 था यहाँ. साइन 90 तो 1 हुआ ना. सो आई एम नॉट राइटिंग इन डिटेल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. इज इट क्लियर? या सो dbx को आप ऐड करो. dbx आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl का बाय r स्क्वायर इनटू cos थीटा, राइट? सो राइट हियर cos थीटा. लेट्स ऐड इट. तो अगर आप इसको ऐड करोगे क्या लिखोगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई r का स्क्वायर cos थीटा. अगर ये एंगल थीटा था, राइट? सो cos थीटा अगर आप निकालोगे, दिस इज x, दिस इज r. cos थीटा क्या होगा बताओ? cos theta will be your r by small r. So cos theta is r by small r. तो यहाँ आप लिख लो cos theta r by small r dl. ठीक है, this is your magnetic field, right? All constant we have taken out. अब आप इसको सॉल्व करो. म्यू नॉट बाई 4 पाई i by how much it is going to be? r cube into r, and dl, sum of dl will be equal to what? Sum of the length of this loop will be equal to how much? 2 pi r. So आप लिख डालो 2 pi r. Now you try solving it. अगर अभी आप solve करोगे, this will become this. So mu naught I, one r is here, another r is here. So mu naught I r square by a small r का cube. Small r is equal to how much? This is equal to r square plus x square. So इसका क्यूब करोगे तो कितना पावर हो जाएगा? I mean already half power was there, 3 more power is coming. So r square plus x square का power 3 by 2 by 2. This 2 was there. So what is the magnetic field we are getting at an axial point? This we are getting as mu naught I r square by r square plus x square का power 3 by 2. What will be magnetic field at the center? तो फॉर सेंटर, एट सेंटर के लिए क्या लिखोगे? x क्या हो जाएगा तुम्हारा? x हो जाएगा 0. सो सेंटर पे x तुम्हारा 0 हो गया. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? x को आप 0 कर दो. सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, r स्क्वायर का पावर 3 by 2. सो दिस विल बिकम म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
and this is r cube. So this is equal to mu naught I by 2r. Then तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें क्या मिला? एट एनी एक्सियल पॉइंट एट अ डिस्टेंस x इट विल बी हाउ मच? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2. एट द सेंटर कितना होगा? x का वैल्यू 0 कर दो, यू विल गेट म्यू नॉट आई बाय 2r. इज इट क्लियर सो फार एवरीबॉडी? इज इट क्लियर सो फार? ओके लक्ष्मी, ठीक है, थैंक यू. ओके लक्ष्मी, आई विल शो यू द डायग्राम. विच डायग्राम? This one? Yes. Okay. Okay, हो गया, चलो ठीक है. So at the center we have calculated, at an axial point we have calculated. Let's now talk about, let's say no, there is not the whole circuit in the question, only an arc is given, and through this arc current I is flowing, and you are asked magnetic field at the center of this arc. How you will calculate? So for this you will use unitary method. कैसे? जैसे देखो, पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए सेंटर पे तुम्हें पता है कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है. कंप्लीट सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री. हाउ मच एंगल कंप्लीट सर्कल विल मेक एट द सेंटर? 360 डिग्री, राइट? तो यहां से आप क्लियरली लिख डालो कि बिकॉज ऑफ एन आर्क मेकिंग एन एंगल 360 डिग्री, magnetic field value is mu naught I by 2r, because at the center, because of complete circle, current magnetic field is mu naught I by 2r. So if an arc is making an angle 360 degree at the center, magnetic field is this. For unit angle, it will be how much? It will be mu naught I by 2r divided by, always go with this angle in radians. So 360 degree ना लिखने की जगह 2 pi radian से काम करो, ठीक है? Always write it in radian angle को. So at the center 360 degree means 2 pi radian. So for 1 radian, how much magnetic field will be there? This divided by 2 pi. And for theta radian, let's say this angle is theta radian. So for theta radian, how much will be the magnetic field? Mu naught I by 2r into theta divided by 2 pi था पहले से. So this will be the magnetic field. So whenever in the question you are asked there is an arc subtending an angle theta at the center, calculate magnetic field at the center. So magnetic field will become how much? It will become magnetic field because of complete circle. This is this into this theta divided by 2 pi. This is going to be the answer. ठीक है? एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम एज फॉर कंप्लीट लूप. अगर कंप्लीट लूप एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, राइट? सो फॉर कंप्लीट लूप करंट इन, if current is in clockwise direction, magnetic field is in which direction? Inward. So यहाँ भी magnetic field क्या होने वाला है? Inward. ठीक है? जैसे यहाँ पे देख लो ना, यहाँ पे clockwise current है, right? So for this magnetic field at the center is inward. So if you take any small arc of this, then also magnetic field at the center will be inward. Okay? So that way we will calculate. Everybody clear? If yes, then let me know. Is it done? चलो ठीक है. Now we will calculate magnetic field ka magnitude because of a straight wire. Now I'm not going to do the derivation here, but you people will be doing it. But I will tell you how to use the formula. So if you will be calculating magnetic field because of this straight current carrying wire at a distance d, at a point
P which is at a distance D from the center of the wire, let's say, ठीक है, और सेंटर नहीं कोई भी पॉइंट हो, आई मीन यहाँ से भी कोई भी पॉइंट ले लो, इट डजेंट मैटर, दिस पॉइंट हैज टू बी एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। देन तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी बिकॉज ऑफ फाइनाइट लेंथ ऑफ वायर कैरिंग करंट आई, कैसे निकालोगे? तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, याद रखना, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा, इस थीटा का लिमिट लेना, तुम ऑलवेज फॉर्मूला को ऐसे लिखना है। लिमिट कैसे लेंगे? तो लिमिट लेने के लिए ना, देखो अगर डेरिवेशन भी कर लोगे ना, फाइनली हम इसी को समझाते हैं सो दैट यू कैन यूज द फॉर्मूला वाइजली। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, this is a finite length of wire. It has one end at point A, another end at point B. You do one thing, join point A with B, ठीक है, and join point B with A. हमने कर दिया join, ठीक है। अब देखो एंगल, ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट P है, डन है, इट इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद द विद दिस डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है। सो इस डॉटेड लाइन को रेफरेंस लाइन मानकर चलते हैं हम हमेशा एंगल मेजरमेंट के लिए। रेफरेंस लाइन कौन सा लाइन होगा? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से पास करता हुआ लाइन विच इज कटिंग द वायर एट सर्टेन पोजीशन, राइट। सो दिस इज रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन कहने का मतलब जिस लाइन से हम एंगल को मेजर करेंगे। सो वी हैव टू एंगल विच वी हैव टू मेजर विच एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ठीक है। एंगल मेजरमेंट कहां से करोगे? ये वाले लाइन से, आई हैव गिवन यू, रेफरेंस लाइन से करेंगे, ठीक है। So if you are measuring angle in the direction of current, angle will be positive. If you are measuring angle opposite to the direction of current, angle will be negative. ठीक है, यही चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन किधर है? अप। अब देखो यहां से मैंने एंगल ऐसे मेजर किया, सो आई एम मेजरिंग एंगल इन द अप सेंस। सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा टू, दिस इज थीटा टू, क्योंकि वायर स्टार्ट कहां से हो रहा है? ए से, एंड कहां कर रहा है? बी पे। सो दिस इज नेक्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल इज विच वन? दिस वन, एंड दिस यू आर मेजरिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसलिए ये होगा माइनस थीटा वन। तो यहाँ पे आप लिमिट रखोगे, एंगल इज चेंजिंग फ्रॉम माइनस थीटा वन टू प्लस थीटा टू, like this you will put the angle, ठीक है। तो whenever you are asked to calculate magnetic field because of current in a finite wire, कोई भी P पॉइंट पे निकालना है, फर्स्ट डू वन थिंग, P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो वायर पे, दिस इज परपेंडिकुलर, इट विल एक्ट एज अ रेफरेंस लाइन। नाउ कंबाइन द एंड्स ऑफ वायर विथ पॉइंट P, ठीक है। स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो जो एंगल बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? थीटा वन। सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा वन एंड दिस एंगल इज थीटा टू। सो साइन के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे, दिस विल बी माइनस थीटा वन, दिस इज प्लस थीटा, बिकॉज वन इज गेटिंग मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड अनदर वन इज गेटिंग मेजर्ड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब देखो तुम्हें लिमिट लिखना आता होगा, लिमिट लिख डालो, 4 पाई डी, थीटा की जगह पहले प्लस थीटा टू रखोगे, साइन थीटा टू माइनस देन साइन माइनस थीटा वन। और साइन माइनस थीटा का वैल्यू तुम्हें पता है क्या होता है? साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, है ना, यू ऑलरेडी नो दिस, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो हियर इट विल बिकम म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा टू माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ साइन थीटा वन। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला, डन है। तो फॉर्मूला तुम कहीं भी देखोगे ना, फॉर्मूला कुछ ऐसे आता है, देयर इज अ स्ट्रेट वायर एट पॉइंट P at a distance r, if you have to calculate magnetic field, and if this angle is theta 1, this angle is theta 2, then directly formula लिखा होता है mu naught I by 4 pi d into sin theta 1 plus sin theta। But you know from where it is coming, ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंगल माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू गया है यहाँ पे, at several places it may change, ठीक है। So that I will show you, let's start, I mean let's discuss some more cases here। So इस पॉइंट पे हमने निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, इफ दिस एंगल मैग्नीट्यूड वाइज इज थीटा वन, ऐसे डायरेक्शन वाइज लोगे, माइनस थीटा वन है प्लस थीटा टू, ठीक है।
सो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना आया है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई टी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो ये फॉर्मूला कब आ रहा है, बाय यूजिंग प्रॉपर साइन कन्वेंशन। ठीक है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में देता है कि चलो ये एंगल का वैल्यू 30 डिग्री है, ये एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है, डायरेक्टली पुट हियर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। नाउ यू डोंट नीड टू पुट हियर -30 डिग्री, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी यूज्ड साइन कन्वेंशन, देन यू हैव गॉट दिस फॉर्मूला। ठीक है, so directly you will be putting in the formula. Now let's say this wire is not finite, this wire is infinite. Then what will be magnetic field at point P? Infinite in the both directions. So मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है ऐसे केसेस के लिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो लेट्स यूज द वैल्यूज। यहाँ पे देखो थीटा 1 क्या होगा, जैसे देखो इफ इट इज फाइनाइट this angle is this. If this length is increasing in the backward direction, this angle is increasing. As it is increasing, angle is more increasing. And if this is at infinite, if this is of infinite length, in that case, this angle will maximum become equal to 90 degree. Similarly, on the upper side. ठीक है? So इस केस के लिए theta 1 will be equal to theta 2 will be equal to 90 degree. और अगर ये 90 degree है, sin 90 is 1, sin 90 is 1. So magnetic field will become mu naught I by 4 pi d into 2. So this will become mu naught I by 2 pi d. This is the thing you have to keep in mind. So for infinitely long wire, if this is infinitely long, then at any point P, magnetic field is equal to mu naught I by 2 pi. Direction you already know how to calculate. Okay? Now let's talk about the wire is not infinitely long on the both sides. Let's say here it is ending and this side it is of infinite length. Then formula में put करो आप, magnetic field का formula मैंने क्या दिया, mu naught I by 4 pi d sin theta 1 plus sin theta 2. ठीक है, so here if you talk about this angle will be 90 degree, है ना, क्योंकि this is infinitely long, it will become 90 degree. And another end is this, one end is this at infinity, another end is here. ठीक है, so at this point if you draw a line with the P, these two lines are getting overlapped, है ना, B point से जो line जा रहा है वो P से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, है ना, बिकॉज अर्लियर क्या होता था, पॉइंट P यहाँ है, ये लाइन डिफरेंट है P से परपेंडिकुलर लाइन से, बट हियर P से परपेंडिकुलर बनाओगे वो भी यही लाइन है, और एक एंड से P को कनेक्ट कर रहे हो वो भी वही लाइन है. सो दिस टू आर पैरेलल लाइंस, हियर दिस टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस, सो एंगल इज 0 डिग्री. अगर यहाँ पे आप पुट करोगे तो व्हाट विल हैपन, साइन थीटा वन इज 90 डिग्री, थीटा 2 is 0 degree, sin 0 is 0, so this will become mu naught I by 4 pi t. ठीक है, everyone clear so far? Everyone clear so far? If yes, then let me know please. Okay, Lakshmi, thank you. अब देखो मैंने वो फॉर्मूला तुम लोगों को क्यों बताया था, दैट यू विल गेट टू नो. अब देखो यहाँ पे पॉइंट P मैंने कहाँ लिया है. ओके, सो पॉइंट P आई हैव टेकन समवेयर आउटसाइड. दिस इज अ फाइनाइट वायर. ठीक है, ये तुम्हारा फाइनाइट वायर है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में नहीं निकालना है, इस रीजन में कहीं नहीं निकालना. P पॉइंट इज आउटसाइड दिस रीजन हियर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बताओ. मैग्नेटिक फील्ड का मैंने फॉर्मूला बताया, म्यू नॉट I by 4 pi d, बेसिक फॉर्मूला, नॉट द पर्टिकुलर वन, साइन थीटा, और इसका लिमिट लोगे आप. ठीक है, सो मैंने बोला था कैसे करना है, क्या बोला था मैंने, P पॉइंट से सबसे पहले वायर पे परपेंडिकुलर बना लो. अब देखो P पॉइंट से वायर पे परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, वायर तो यहीं तक है. सो लेट्स ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन. सो वायर के अलोंग ही हमने डॉटेड इमेजिनरी लाइन बनाया. P से परपेंडिकुलर बनाओ ऑन दिस इमेजिनरी लाइन, इट इज दिस. Now one end of wire is this, another end of wire is this. Now draw the angle. So this is one and this is another line. ठीक है, एंगल अगर आप देखते हो, एंगल मेजर कहाँ से करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन से. दिस इज द रेफरेंस लाइन, राइट, ये है तुम्हारा रेफरेंस लाइन. सो A will be AP will be
making theta 1 angle, VP will be making theta 2 angle, because this is the starting point, this is the end point, right? So start measuring the angles. You are measuring first angle in up direction, second angle also in the up direction. Both are getting measured in up direction. So this is also plus theta 1 and this is also plus theta 2. If you put here plus theta 1 and plus theta 2, then formula क्या हो जाएगा? देखो, म्यू नॉट आई बाई 4 pi d sin theta 2 minus sin theta 1. ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ तुम लोगों से कि इफ देर इज अ वायर and point P is in this space, if point P is in this space, then magnetic field का फॉर्मूला क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई 4 pi d sin theta 1 plus sin theta 2, जो हमने पहले यूज किया, क्योंकि पहले के केसेस में P was in this region, है ना? इधर यहाँ से यहाँ तक के रीजन में था, है ना? नाउ पॉइंट P इज नॉट इन दिस रीजन, आउटसाइड द रीजन, सो वैल्यू माइनस में आ रहा है, साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1. इसलिए मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि दिस फॉर्मूला इज मोर इम्पोर्टेंट. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, ठीक है? विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन इफ यू पुट, यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज. तो दिस इज दिस. अब देखो यहाँ पे मैंने सेम थिंग किया. अगर अगर तुमने लिया यहाँ पे, सॉरी एरो ऐसे लो, so this is theta 1, this is theta 2. If you will put the values, then plus theta 1 plus theta 2 put करोगे and you will be getting sin theta 2 minus sin theta. Similarly यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, फाइनाइट वायर है and there is point P here. 30 डिग्री ये दिया हुआ है, 60 डिग्री ये दिया हुआ है. What will be the value of magnetic field? मुझे ये बताओ, क्या लिखोगे? Should we try this question? Yes, we are having time. So let's try this. Everybody write. Basic formula आप लिखो. Mu naught I by 4 pi d. Let's say this distance is d. ठीक है? यहाँ पे क्या लिखोगे? Sin theta. लिमिट पुट करो. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिट को आप पुट करो. करो सभी लोग और करके देखो क्या आ रहा है. Everybody do it. Yes. एंगल कैसे कैसे लिख रहे हो ये बता दो. म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी. हाँ ये तो आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी. एंगल में क्या जा रहा है ये बताओ. पी पॉइंट आउटसाइड है ना, यहां से डॉट बना लो. देन ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस. ए इज दिस, एंड स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस, एंड पॉइंट इज दिस. ड्रॉ द एंगल्स. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. एंगल मेजरमेंट कहां से करते हैं? रेफरेंस लाइन से. फर्स्ट एंगल को मेजर करो. फर्स्ट एंगल इज दिस वन. ए स्टार्टिंग पॉइंट है ना वायर का, सो क्योंकि करंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर गोइंग हियर, राइट? So this angle is your theta 1 and this is getting measured opposite to the direction of current. So this angle is your how much? Minus 60. And this angle is also getting measured in downward sense, so minus 30. ठीक है? अब यहाँ पे आप पुट कर दो. कहाँ से कहाँ जा रहे हो आप? थीटा 1 से थीटा 2. तो थीटा 1 क्या है तुम्हारा? माइनस 60. और माइनस 60 से कहाँ जा रहे हो? माइनस 30. पुट इट, you will get the answer. तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ माइनस 30 क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30 माइनस साइन ऑफ माइनस 60 क्या होगा? माइनस साइन 60. तो यहाँ से माइनस माइनस मैंने प्लस किया, साइन 60. अब मुझे बताओ ये कितना हो? नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन 60 क्या होता है? √3/2. साइन 30 क्या होता है? हाफ. So this is this. So answer is mu naught I by 4 pi d. If this is d, then and this is √3 minus 1/2. So this will be the answer. Everyone agree with this? बताओ, किसी को कोई डाउट है? If yes, then let me know. ठीक है? सो देखो बेसिक फॉर्मूला ये सारे देखो. टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन योर calculation of magnetic field. One is your circular loop, and its arc
I mean, you may be asked to calculate magnetic field at an axial point at the center, magnetic field because of arc at the center. So circular loop. Second thing is your straight wire. ठीक है, दोनों ही केस में हमने फॉर्मूला पढ़ा. सर्कुलर लूप की अगर बात करो तो जनरल फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. एंड सेंटर पे अगर आप निकालते हो तो ये आया म्यू नॉट आई बाई 2r. And if you are calculating because of an arc, then the formula was mu naught I by 2r into theta by 2 pi. ठीक है? So this was the formula we get. And for a straight wire, dB line कैसे लिया था? Okay, I will take you back there. Just wait for some moment. स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला क्या आया मैग्नेटिक फील्ड का? मैं जनरली ऐसे ही लिखना पसंद करती हूँ बिकॉज दिस मेक्स इट द जनरल फॉर्मूला. साइन थीटा लिमिट ले लेना थीटा 1 से थीटा 2 विथ प्रॉपर साइन. इफ दिस इज प्लस देन प्लस, इफ दिस इज प्लस देन प्लस, 1 माइनस देन वॉट एवर साइन इज, टेक इट विथ प्रॉपर साइन. लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं याद रखना है तो सिंपल याद रखना कि अगर तुम्हारा दिस इज व्हाट इफ if point P is lying in this region of the wire, then magnetic field का formula is what? Mu naught I by 4 pi d sin theta 1 plus sin theta 2. ठीक है? Let me write it. B is what? Mu naught I by 4 pi d sin theta 1 plus sin theta 2. And if it is outside, अगर ये outside है तो formula क्या आया था? याद करो. What we got? Sin theta 2 minus sin theta 1. So, if it is outside, if point P is outside somewhere here, then B is how much? This is equal to mu naught I by 4 pi d sin theta 2 minus sin theta 1. जैसे previous question में देख लो, theta 2 को आप क्या रख रहे हो? theta 2 आपका क्या है? theta 2 is your minus 30 and theta 1 is what? minus 60. तो यहाँ पे theta 2 को क्या रखोगे? -30 और थीटा 1 को क्या रखोगे? -60 यू राइट हियर. ठीक है? सो इफ यू डू दिस साइन थीटा 2 क्या हो जाएगा? -sin30 एंड दिस विल बिकम +sin60. सो सेम वैल्यूज आएंगे जिस तरह से यहाँ आया. आई विल सजेस्ट यूज दिस जनरल फॉर्मूला. put the angle with proper sign convention, you will be getting the answer. ओके. सो देखो मैग्नेटिज्म में हमें ये दो ही स्ट्रक्चर का बनाना है मैग्नेटिक फील्ड. सो यू विल बी आस्क्ड आइदर बिकॉज ऑफ सर्कुलर लूप और बिकॉज ऑफ स्ट्रेट वायर. और कुछ पूछता नहीं है. ये भी क्वेश्चन मैंने स्ट्रेट वायर से ही लिया था. सो दिस थिंग ऑल्सो यू कैन डू. ठीक है? और सर्कुलर लूप से क्वेश्चंस आएंगे. सो यू कैन चेक एवरीवेयर पीवाईक्यूज. यू कैन चेक नाउ. यू कैन डू. यू विल बी एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस. लक्ष्मी तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? डीबी को मैंने कैसे लिया था? व्हाट वाज योर क्वेश्चन? Let me know. How do we first take dB line? देखो dB एलिमेंट हम एलिमेंट लेना जानते हो ना. इन इलेक्ट्रोस्टैट we did, है ना? We calculated things like there was ring, upon it there was a charge present throughout on the surface of ring, right? And on the axis of ring we were asked to calculate electric field. We took one element, we calculated small charge on it. Then we calculated electric field at point E. So electric field from the positive charge comes out like this. So ऐसे बनाया था हमने. In the case of magnetic field, current is going like this. So we took one element, current element, ideal. I have told you this is current element, right? So here this is ideal is the current element. Because of this element, we calculated magnetic field at this point. So try to use the Biot-Savart law. बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल करंट एलिमेंट क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब. आर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट पी विद द करंट एलिमेंट. सो करंट एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर मींस वहां से स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करो. दिस इज द पोजीशन वेक्टर. दिस इज द पोजीशन वेक्टर, राइट? सो व्हेन यू विल डू डीएल क्रॉस आर, you will get here a magnetic field in certain direction perpendicular to r vector, right? Yes. What you want to say? I couldn't get you, sorry. So here you draw the perpendicular along this direction. You will, sorry, for this case when current is going inward at the top point,
magnetic field will be directed in which sense? I have explained it in this direction, right? ऐसे भी आप magnetic field का direction देखो, will be perpendicular to dl and also to r. So r से perpendicular दो direction हो सकता है, एक इधर दूसरा इधर. Our direction will be in this sense for this current going, because current is going in at the top, and then you just do dl cross r. I mean, you just do dl cross r the way I told you to do. Cross product आप करो, you will get your thumb in this direction. Just curl your finger, right hand finger, from dl to r. So that is how we do dl cross r. And when you will do dl cross r, dv is in this direction, and dv ka value will be this much. So calculate it. Mu naught by 4 pi I dl cross r by r cube. dl और r के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है. So if you will calculate dv, it is mu naught by 4 pi I dl by how much? By r square. Sin 90. ठीक है? Sin 90 is 1, so this is the value you're going to get. Is it clear, Lakshmi? If yes, then let me know. Or if you want to know anything else, then also let me know. देखो, तुम लोगों को मैं एक सजेस्ट करूंगी, जितने डेरिवेशन मैंने कराए थे सारे डेरिवेशन के थ्रू जाओ, प्लीज गो. Because if you're not going through those, if you're not sitting in your home and imagining things कि कैसे कैसे हो रहा है, you won't be able to understand. मैं बता रही हूँ. क्योंकि देखो, चीजें ना ऐसे नहीं समझ में आती. चीजें समझने के लिए you really need to sit with things. When you get to know people, when you sit with them, right? So if you really want to understand things, you need to, I mean, if even if 50% you have understood, that is enough. It is also enough, because rest 50% will only come through your own understanding, and for that you need to sit with the concept. You need to think कि अच्छा मैम ने बोला डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री है, इमेजिन करके देखो कि ये कैसे हो रहा है. ट्राई टू जस्टिफाई इट बाय थिंकिंग ऑन योर ओन. अगर मेरे समझाने से नहीं हो रहा, then you should try analyzing yourself. So I can help you. अभी मुझे बताओ if you are failing somewhere too. Let me know, Lakshmi. Ma'am, I'm asking that how do we first take that angle, ma'am? Which angle? Angle between dB and the tangent. R. dB, I mean ये वाला एंगल जो मैंने लिया था थीटा, No, and then ma'am. Another theta. yes, you are talking about this angle, right? Yes, ma'am. So I told you, right? तुमने तुमने ये पढ़ा है. Let me take you to basic. तुमने वेज प्रॉब्लम्स पढ़े हैं ना, ये वाले, ये पढ़े, बनाए हैं. इफ यू हैव ड्रॉन, देन लेट मी टेल यू, तुम लोग क्या करते हो. यहाँ पे कोई एक क्यूब होता है, ये एंगल थीटा होता है. यहाँ से mg बनाते हो और परपेंडिकुलर टू द प्लेन बनाते हो. इस एंगल को भी थीटा बोलते हो ना. Yes, ma'am. और हाँ, तो ये थीटा कैसे हो रहा है, ये मुझे बताओ. तुम्हें पता है ये थीटा कैसे हो रहा है? अगर ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हो रहा है? टेल मी. तो सिंपल है. दो लाइन ले लो. लेट्स से दिस इज लाइन 1. लेट मी एक्सप्लेन इट. लेट्स से दिस इज लाइन 1, दैट इज अलोंग द प्लेन. इसको 1 बुला रही हूँ. दिस इज हॉरिजेंटल लाइन, इसको मैंने 2 बुलाया. सो 1 and 2 के बीच का एंगल क्या है? थीटा डिग्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लाइन 4 along the mg. This is perpendicular to 2. 4 is perpendicular to 2. You can see. And let's call this 3. 3 is perpendicular to 1. This line, this is perpendicular to 1. So 3 is perpendicular to 1. So if angle between 1 and 2 is theta, 3 and 4 के बीच में भी angle theta होगा. If between 1 and 2 it is theta, between 3 and 4 it will be theta also. This is geometry rule you must have studied in class 8th or 9th. So ये law ये कहता है कि if angle between two line is theta, then angle between their perpendiculars will also theta.
सो हियर थीटा हमने क्या लिया था, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एंगल मैंने थीटा लिया, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, लेट्स कॉल दिस एज 1, लेट्स कॉल दिस एज 2, एंगल बिटवीन 1 and 2 इज थीटा. नाउ लेट्स टॉक एट दिस पॉइंट. यहाँ पे आप बात कर लो. अगर आप यहाँ पे बात करते हो, तो ये जो डीबी का लाइन दिख रहा है ना, दिस डीबी का लाइन, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, टू लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर, राइट. सो 1 और 2 के बीच में एंगल थीटा है, डीबी वाला लाइन इज परपेंडिकुलर टू 2. एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस लाइन, एक्स एक्सिस का लाइन, लेट्स कॉल इट 3. सो 3 इज परपेंडिकुलर ऑन 1, क्योंकि ये 1 था वाई एक्सिस, 3 इज एक्स एक्सिस, दे आर परपेंडिकुलर. So if you see here carefully, let's call this line 4. ठीक है. So 2 is perpendicular to 4, 1 is perpendicular to 3. Angle between 2 and 1 and 2 is theta. Angle between 4 and 3 is going to be theta. That is by geometry. Yes, Okay, ma'am. this is geometry, yaar. I mean, that is why I say whenever you do things, do with logic. Try thinking कि ये क्यों हो रहा है. If you're not getting answer, ask with your teachers always. ठीक है. Okay, चलो. ma'am. Okay, thank you. All the best, everyone. Thank Thank you, Kiran. Bye bye. Bye bye. Thank you, Lakshmi. Bye. Take care. Take care, everybody.